तो डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर SRC और इस लेक्चर वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इंटरफेरिंग एसिड रेडिकल्स और ग्रुप 2B 2A2B की केमिस्ट्री विथ रेस्पेक्ट टू क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो चलते हैं, यहाँ पे पहला जो टॉपिक है हमारे पास वो इंटरफेरिंग एसिड रेडिकल्स है इन ग्रुप एनालिसिस। तो यहाँ पे एक पूछने वाली बात है कि बेसिकली इंटरफेरिंग एसिड रेडिकल्स का मतलब क्या है। इंटरफेयर कर रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक जनरल ग्रुप एनालिसिस है। तो वी आर हैविंग ए जनरल ग्रुप एनालिसिस। यहाँ पे हर पर्टिकुलर ग्रुप में प्रेसिपिटेटिंग एजेंट या ग्रुप रिएजेंट फिक्स्ड है कि बेरियम ग्रुप 4 में आएगा, बेरियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट होगा, ऐसा फिक्स्ड है। बट अगर बीच में कोई भी एक एनायनिक रेडिकल सपोज ये फॉस्फेट 3- ये वाली एनायनिक रेडिकल फॉस्फेट जो है, अगर वो प्रेजेंट है और अगर यहाँ पे कैल्शियम प्रेजेंट है तो हो सकता है this can be possible that if there is a phosphate radical and there is a calcium 2 plus in the solution, there can be possibility that this calcium and phosphate is going to combine and form calcium phosphate. Now ये calcium phosphate आ जाएगा, अगर ये कैल्शियम फॉस्फेट आ जाएगा तो बेसिकली कैल्शियम कंसेंट्रेशन कितनी हो गई? लो हो गई, बिकॉज कैल्शियम 2 प्लस एक अलग ग्रुप में ग्रुप 4 के आने के पहले दिस कैल्शियम 2 प्लस इज बीइंग प्रेसिपिटेटेड कैप्चर्ड बाय द फॉस्फेट PO4 3- एंड दिस PO4 3- इज अ वेरी स्ट्रांग बेस, द डोनर साइट इज वेरी मच एक्टिव and so that calcium 2 plus is captured as calcium phosphate. Now यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे calcium 2 plus की जो concentration आ गई वो कम हो गया, क्योंकि calcium 2 plus तो basically phosphate के साथ capture हो गया, precipitate हो गया, calcium 2 plus concentration कम हो गया, and when calcium 2 plus concentration drops and when you are going to the group 4 and when you are using the ammonium carbonate as a precipitating agent and you are thinking that in that particular group 4 this calcium 2 plus and this carbonate 2- ये वाली मिला के KSP ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के ओवरटेक कर देगी और यहाँ पे कैल्शियम हमको एस कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले किसी एनायन ने यहाँ पे नॉर्मल ग्रुप एनालिसिस को इंटरफेयर कर दिया है, कैल्शियम 2 प्लस की कंसेंट्रेशन बहुत कम कर दिया है और ग्रुप 4 में जहां पे यूजुअली आपको कैल्शियम 2 प्लस मिलने वाले थे वहां पे कुछ नहीं मिल रहा है। बार बार आप टीचर के पास जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि नो वी आर नॉट गेटिंग एनी प्रेसिपिटेट इन ग्रुप 4, कैल्शियम 2 प्लस एब्सेंट, एंड टीचर इज एवरी टाइम सेइंग दैट नो प्लीज चेक अगेन एंड सी वेदर इज कैल्शियम 2 प्लस दैट इज मस्ट बी प्रेजेंट, एंड बिकॉज इन हिज नोट दैट इज रिटन कैल्शियम 2 प्लस प्रेजेंट, you are not getting in group 4. The problem is not with the teacher, not with you. The problem is about the understanding. Your concept is not clear. Because probably you have not studied the interfering radical. You have not basically thought that this calcium 2 plus or these type of cations may be picked up by some anions which are very strong in nature, and they will capture and make the concentration such low that the Q cannot overtake the KSP, and that lies the problem. और all group analysis अभी बहुत complex हो गया, diffused हो गया, नहीं मिल रहा है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं फॉस्फेट ने इंटरफेयर किया, फ्लोराइड ने इंटरफेयर किया, बोरेट ने इंटरफेयर किया, आर्सेनेट ने इंटरफेयर किया, इसने नॉर्मल ग्रुप एनालिसिस को इंटरफेयर किया। दिस आर देयरफॉर इंटरफेयरिंग रेडिकल्स। ये नॉर्मल कहां पे आने वाला था वहां पे नहीं आ रहा है, डिफ्यूज्ड हो गया है, डिफिकल्ट हो गया है, मैच नहीं हो रहा है, मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? किसी ने इंटरफेयर किया है, पिकअप कर दिया है कैटायन को। Now that is what is happening and that is called the interfering radicals. मैं यहाँ पे एक चीज बताने वाला हूं कि हम पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल ग्रुप एनालिसिस में इंटरफेयर किया है और हम पढ़ रहे हैं दैट फॉस्फेट ऐसा है, फिर फ्लोराइड है, फिर बोरेट, आर्सेनेट, ऐसा they have interfered. I hope that the thing is clear to you that basically they have formed in between calcium phosphate
and that means that the calcium 2 plus concentration has come down, and your group normal group analysis, and that was calcium 2 plus and carbonate 2 minus in group 4, that is the Q. Now because this has come down and because that is being picked by the phosphate, and so that becoming less than the Ksp of calcium carbonate, you were thinking it should be greater, but because the calcium is actually present in the sample but not greater because that is being picked up by phosphate before it goes to the group 4 for the usual group analysis precipitation. Now Q phosphate interfering radicals कंसेप्ट तो पता चल गई कि, लेकिन अभी बात है क्यों फॉस्फेट, क्यों फॉस्फेट इंटरफेरिंग रेडिकल्स, क्यों फ्लोराइड इंटरफेरिंग रेडिकल्स है, बताओ क्यों फॉस्फेट है, क्यों फ्लोराइड है? What is the reason why phosphate is interfering radical, fluoride, then borate? What are the reasons behind that? क्यों पता है? क्यों पता है कि बेसिकली इसका जो मदर एसिड है फॉस्फोरिक एसिड, ये वीक एसिड है. The mother acid is a weak acid, and hence the conjugate of this, that becomes very strong. And because phosphate is very strong base, and therefore that picks up the calcium 2 plus or any cation much easily. Well, similarly is F minus, the starting point, that is HF, that is a very weak base, and because HF is a weak base and fluoride is very strong conjugate base, and therefore this fluoride can pick up the cations, other cations very easily. जो interfering radicals है, जो interfering radicals है, उसका अगर तुम back में जाओ, you will find that they are coming from a weak acid, and hence the conjugate is strong, hence they are becoming strong, they can pick up the cation and interfere with the normal group analysis. इसका यहां पे देखते हैं, ये जो मैंने कहा था कि ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है, इसका जो Q ये Ksp से ग्रेटर हो रहा है और कैल्शियम 2 प्लस मीडियम से रिमूव कर रहा है, एसेंशियल और बहुत अमाउंट में रिमूव कर रहा है, सो दैट कैल्शियम 2 प्लस जहां पे गिरने वाला था, ग्रुप 4 में प्रेसिपिटेट होने वाला था, वहां पे नहीं हो रहा. अभी एक चीज है कि पहला तो एक डिसीजन लेना है. Now you can see here, you can realize also, because you have that intellectual level, or you are basically watching this particular lecture video very closely, and you have that particular level, you know that what is the concept of interfering radicals. They are interfering with the normal group analysis. Why certain anions are only called interfering radicals? Because their mother acid is weak and hence the conjugate is very strong. Now if they interfere, we cannot let them interfere. If they interfere, कैन वी लेट देम इंटरफेयर? अगर वो इंटरफेयरिंग है, हमको पता है, क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ दें या उसको रिमूव करें? So obviously the answer is that we must remove the interfering radical, otherwise that will basically interfere with the normal group analysis and we are not going to come to any conclusion on that. Okay, na? The cations will be missed. So obviously we will basically try to remove, and there are procedures for removing that interfering radicals. You know that. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जनरली बेसिकली ये जो फॉस्फेट है, बोरेट है, फ्लोराइड है, वी रिमूव देम इन ग्रुप 3A बिफोर गोइंग टू ग्रुप 3A. व्हाई नॉट इन 1 and 2? 1 and 2 में रिमूव क्यों नहीं कर रहे हम? ग्रुप 3A में क्यों रिमूव कर रहे हैं? व्हाई वी आर ट्राइंग टू रिमूव इन ग्रुप 3A, व्हाई नॉट इन 1 and 2? क्यों हम 1 and 2 में रिमूव नहीं कर रहे हैं और ग्रुप 3A में रिमूव कर रहे हैं? यहाँ का क्वेश्चन यहाँ पे देखो, दिस इज द कैल्शियम फॉस्फेट. Now that is the dissolution precipitation equilibrium. Now this is, we are getting like this. This is the Q, that is calcium 2 plus whole 3 and PO4 3 minus and whole 2 like this. And this is greater than the Ksp. We are saying that is greater than Ksp, suppose, and then only this will get precipitated. Now you can see here, this is PO4 3 minus. Now if you remember,
what is the group reagent in 1 and 2? In 1 में क्या है? 1 में HCl है. 2 में क्या है? 2 में क्या है बताओ? 2 में HCl plus H2S है. और 3A में क्या है? 3A में क्या है बताओ? That is ammonium hydroxide plus ammonium chloride है. Okay ना? Then 3B में क्या है? 3B में क्या है? That is obviously that is again ammonium hydroxide and you are adding H2S like that. And so you can see here, and there is a change. There is a change over here. This is divided in two parts. First part, this is like acidic condition. Second part, and this is like ammoniacal condition. Okay ना? 1 and 2 में acidic condition and 3A के जाते ही आते ही that is becoming an ammoniacal condition. Now यहाँ पे सोचो, यहाँ पे group 1, group 2 में, in group 1, in group 2, PO4 किस स्टेट में है? PO4 मैक्सिमम कैसे है? In H3PO4 है, H3PO4. So that is H3PO4 like this equilibrium plus 3H plus. यहाँ पे सोचो, in group 1 and group 2 में क्या है? Maximum on the left hand side. Maximum on the left hand side because there is an acidic condition. The PO4 3 minus these particular anionic side they will be basically protonated like this, and so the donor sites are being blocked, and so PO4 3 minus maximum maximum will be found as H3PO4, and so the concentration of this one in the acidic condition will be much lesser, and if that is much lesser, this will be lesser than this. Now this is the reason that it's no use to remove in over here, because that is not a threat, because the concentration of the anionic form is much lesser. So it's no use to remove that. So कहाँ पे remove करना जरूरी है? जहाँ पे solution alkaline ammoniacal हो रहा है, and that is from 3A, and then this concentration will basically increase, because from 3A the condition, you can see the condition, that is ammonium hydroxide, ammonium chloride, then that is more will be found as PO4 3 minus, then this will be a thread, then the donor site will be open, then it can pick up the cation, and then greater than KSP, and job done, interfere. So please remove. Where? Not in 1 and 2, because that is acidic condition. No anion that is basically present like a mother weak acid, but in alkaline condition must remove. So removal done from 3A onwards. So that is the basic chemistry for the interfering radicals. Now with this, I will go to the group 2 and group 3B. यहाँ पे क्या है? That is basically sulfide, so I am taking that in together as group 2 and group 3B. And the precipitation of the metal ion as sulfides. यहाँ का जो KSP है, जो सल्फाइड्स का है, तो वो यहाँ पे एक बार हम देखते हैं कि KSP जो group 2 का है. Now, what is the KSP of group 2 sulfides? You can see here 10 to the power minus 54, 10 to the power minus 44, 10 to the power minus 29, like this. The 10 to the power minus 18 तो बहुत lower side में. That is the lower side. Whereas the group 3B KSP, you can see here minus 26, minus 24, minus 23, like on the higher side. So basically, both are metal sulfide, but one KSP on the lower side, one KSP on the higher side. So what are the reagents that should be taken here? So that group 2 is being precipitated separately, and group 3B is precipitated separately as sulfide. इसी का जो डिस्कशन आपको समझ में आ रहा है कि यहां पे हमारे लिए ये ग्रुप 2 है और वर्सेस ये ग्रुप 3B है, तो इसका दोनों का ही बेसिकली मेटल सल्फाइड प्रेसिपिटेशन है. इसकी KSP वैल्यू लो है और इनका KSP वैल्यू सल्फाइड्स का हाई है.
और मैंने कहा था आपको कि मुझे आइडेंटिफिकेशन चाहिए। प्रेसिपिटेशन तो सही है, लेकिन प्रेसिपिटेशन टारगेट नहीं है, आइडेंटिफिकेशन मेरा टारगेट है। और मुझे मिक्सचर नहीं चाहिए। I do not need a mixture because that will make my particular process very difficult. I need a selective precipitation. I need selective precipitation, and so I will ensure the selective precipitation by the choice of reagent. तो क्या करते हैं यहाँ पे देखो, अगर ग्रुप 2 में तुम जाओ, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 2 में तुम देखो कि वी आर कमिंग फ्रॉम ग्रुप 1 एंड द ग्रुप 1 व्हाट इज द प्रेसिपिटेट, व्हाट इज द reagent, you know, that is HCl and that is H plus Cl minus. So we are coming from group 1 having the reagent HCl giving H plus and Cl minus, and then over that we are adding a precipitating agent that is H2S, and that is a weak acid, and that is giving 2H plus H2 minus like this. नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पहले देखो HCl हम तो हटा नहीं सकते सोल्यूशन से, तो हमने HCl का यूज कर दिया है। सो वी कैन नॉट रिमूव द HCl फ्रॉम द सोल्यूशन एट दिस पर्टिकुलर जंक्शन। अगर तुम सही से सोचो तो ग्रुप एनालिसिस बहुत ही कैलकुलेटिव एक टेबल है, बहुत ही कैलकुलेटिव एक अप्रोच है, जहां पे एवरीथिंग इज बेसिकली कनेक्टेड टू ईच अदर। That is, everything is connected to each other, and this HCl we cannot remove that. We thought about that, then we have utilized this HCl negative point जो था यहाँ पे, we have converted that to the positive point, and this H2S that is giving 2H plus H2 minus. इसके बाद obviously तुमको समझ में आ रहा है, there is a common ion effect. So obviously तुमको समझ में आ रहा है, there is a common ion effect, and because this H2S that is a weak electrolyte, it's HCl, this is the common ion, and so the dissociation of H2S is suppressed. Now this is being suppressed like this. याद रखो KSP ग्रुप 2 की बहुत कम है, ग्रुप 3B की ज्यादा है। हमको H2 माइनस कंसेंट्रेशन नहीं बढ़ा सकते। अगर हम H2 माइनस कंसेंट्रेशन बढ़ा दिए तो वहां पे बेसिकली क्या होगा, 2 का भी सल्फाइड precipitate out होगा and 3 का भी होगा, and that will be a mixture and identification will be very difficult. So we are not doing that. We are trying to regulate the condition. We are using the common ion effect to regulate the condition and to regulate the dissociation of H2S and to make the sulfide ion concentration low to such an extent that only and only group 2 metal sulfides are precipitated, but higher group metal sulfides are not precipitated. What is happening over here? Suppose I am saying that, let me formulate one expression of the ionic product. Now this is the expression of ionic product M2 plus and H2 minus like this. This sulfide ion concentration that is becoming less, and this is becoming less over here. And now what is happening here? This less sulfide ion concentration, ये जो less common ion effect के लिए जो sulfide ion concentration less हो गया, that is found to be sufficient to overtake the very low KSP of group 2 metal sulfides only. फिर से मैं कह रहा हूं, देखो, because of common ion effect, the concentration of sulfide ion is basically lowered. Now this lowered sulfide ion concentration is sufficient to exceed the KSP value of group 2 only. Why? Because the KSP of group 2, the metal sulfide KSP are very less, but this is not sufficient to overtake the KSP values of higher group 2 से हायर मेटल सल्फाइड, हायर ग्रुप मेटल सल्फाइड। यही केमिस्ट्री है कि HCl को मैंने यूज कर दिया, रिमूव नहीं कर पाया लेकिन यूज कर दिया, मैं फिर से कह रहा हूं, चेंजिंग द नेगेटिव पॉइंट टू ए पॉजिटिव पॉइंट, एंड देन सल्फाइड एंड concentration is made to such an extent that can overtake the KSP of group 2 metal sulfide only, and higher group metal sulfide remains like that. अगर ऐसा है ग्रुप 2 का, तो 3B का कैसा है? Now, if this is the group 2, then what is the 3B? What is about the chemistry of 3B, and what is the group reagent that is being taken over here? याद रखना, 3B का मैं ग्रुप 2 से कंपेयर करने के लिए पढ़ा रहा हूं, लेकिन इसके पहले एक 3A भी है जहां पे मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड की यूज की है। उसकी केमिस्ट्री में इसके बाद के लेक्चर वीडियो में आऊंगा।
Before that, you can see here, this is a 3A, there is a 3A, and what is the group reagent over here? This is ammonium hydroxide, ammonium chloride. But why I am teaching this group 3B? Because I am trying to compare the group 2 and group 3B, and what I require now, I do not require lower sulfide and concentration. मेरे को जरूरत नहीं है sulfide and concentration, जरूरत नहीं है lower हो. अगर lower करना है तो common NF8, अगर lower नहीं करना है, please common NF8 मत करना. Don't use common NF8 when you do not want lower concentration. Do not want that particular electrolyte which is weak becomes much weaker. Do not want that, then don't use common NF8. अभी तुमको यहाँ पे बढ़ाना है तो ये वाली तो अलग ही होगी ना. What is the reagent here? And that is ammonium hydroxide and H2S. Ammonium hydroxide is like a co-reagent. H2S is the precipitating agent. Now this ammonium hydroxide is basically coming from group 3A. Again you can see here, मैं remove नहीं कर पाया, इसलिए मैंने उसका use कर दिया. You cannot remove that ammonium hydroxide completely, so I have used that. I made the negative to the positive point. If you think carefully, they are very interconnected and very well thought of. No, what is happening over here? What is happening in the group 3B? What is happening in the group 3B? यहाँ पे group 3B में क्या हो रहा है देखो, ये वाली ammonium hydroxide, and that is ammonium hydroxide, and that is giving NH4 plus OH minus. So ammonium hydroxide इसमें ये दे रहा है ammonium plus OH minus, and this is H2S, and that is giving 2H plus H2 minus. ये वाला हो गया. अभी यहाँ पे मीडियम में अगर ये दोनों हो गए, सो बेसिकली यहाँ से ये वाटर फॉर्मेशन जो थर्मोडायनामिकली वेरी स्टेबल कंपाउंड, एंड देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इन ग्रुप 3B, एंड यहाँ पे इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू द राइट हैंड साइड. व्हेन द इक्विलिब्रियम इज गोइंग टू द राइट हैंड साइड, यू कैन वेरी वेल सी हियर दिस कंसंट्रेशन H2 माइनस वो बढ़ गया. So whenever you are seeing this one, ammonium hydroxide giving ammonium plus OH minus, H2S giving 2H plus H2 minus. Now this 2H plus and OH minus, they're combining with each other, and sulfide and concentration that increases. And if the sulfide and concentration increases, obviously, and then the higher KSP metal sulfide, which is nothing but the group 3B metal sulfide, they are now being precipitated, which was in the solution in group 2 because of the lower sulfide concentration. If they were present, they were in the solution of group 2. Now they are being taken out, precipitated, because you have increased sulfide and concentration. Now because now you have increased the sulfide and concentration by utilizing this ammonium hydroxide and H2S and formation of water, and then make the equilibrium go to the right hand side, increase the sulfide and concentration. Now this KSP, this higher KSP value of group 3B metal sulfide, now that is being overtaken by the Q under this condition and precipitated out. This is the chemistry of group 2. Why this reagent? And group 3B, why these reagents? So we'll stop here in this lecture video, and in my next lecture video, I will be discussing about the group 3A. Thank you, dear students, and you take care, and bye.